Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. First of all, I would like to welcome and thank you all of you being here. जो ऑफिस में लोग हैं और जो ऑनलाइन हमें ज्वाइन कर रहे हैं. Today is a holiday, public holiday, but still we thought to exploit this opportunity for the training. और आज हमारा स्पेसिफिक टॉपिक जो है वो सेल्स मैनेजर के रोल के और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे और हाउ ही कैन बी ए सक्सेसफुल सेल्स मैनेजर. सिर्फ एक टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं. तो मैं कहता हूँ कि जैसे इस वक्त हमारे मुल्क की या इकोनॉमिक सिचुएशन है तो हमें तो कोई छुट्टी नहीं करनी चाहिए और बल्कि जो ऐसे यादगार दिन हैं उन पे तो और ज़्यादा मेहनत करना चाहिए. तो एनीवेज वी आर ट्राइंग अवर एफर्ट कि आज के सेशन को हम कामयाब बनाएं. लेकिन सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि एक मैनेजर या एज ए सेल्स मैनेजर आपकी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज और एक्सपेक्टेशंस क्या हैं. जब तक आपको ये क्लियरली नहीं पता होगा तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते. बहुत सारे हमारे जो सेल्स मैनेजर हैं वो एज ए रिप्रेजेंटेटिव प्रमोट होते हैं और फिर एक नए रोल में आते हैं. अब नया रोल जो है उनके पुराने रोल से थोड़ा डिफरेंट होता है. पुराने रोल के अंदर उनको अपनी एक टेरिटरी, अपने कस्टमर्स का काम करके एक रिजल्ट जनरेट करना होता है. बट व्हेन यू आर एलिवेटेड एंड व्हेन यू आर टू द नेक्स्ट लेवल, now your responsibilities are different because your success is the success of your team and your team is your success. So you are now dependent on your team's success to be a successful sales manager. So first of all, you would need to understand what are the roles and responsibilities of a team manager. I think we can define it into three main categories. One is the recruiting, कि आपने recruitment करनी है, और दूसरी training है और तीसरा managing है. ये तीन main part हैं, ये main responsibilities हैं. क्योंकि जो आपको organization goal मिले हैं वो goals आपने अपनी team तक communicate करने हैं और team की success को ensure करना है ताकि as a manager जो हैं वो आप successful हों. So whatever your target is, your main role is the success of the team and achieving organization goals, setting targets for the team members, developing strategies and providing guidance and support to the sales rep. Prioritize coaching and development. देखिए, as a manager, your main role is now as a coach. जैसे एक टीम का कोच होता है तो वो क्या करता है, क्योंकि उसको वो खेल आता है, वो पहले खेल रहा होता है और खेल चुका होता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, सो ही नोज के हाउ टू प्ले. तो वो टीम को कोच करता है. पहले तो उनकी इवैल्यूएशन करता है कि करंट लेवल उनका क्या है, स्किल का, नॉलेज का, कम्युनिकेशन का, रिलेशनशिप बिल्डिंग का, कस्टमर बिल्डिंग का. तो उनको इवैल्यूएशन करने के बाद वो उनको एक ट्रू फीडबैक देता है और उसके बाद उनकी कोचिंग और ट्रेनिंग करता है. तो जब हम कहेंगे कि गोल सेटिंग इज योर फर्स्ट प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन ट्रेनिंग एंड कोचिंग इज योर अनदर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड देन यू हैव अ डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी. One responsibility is from the organization to achieve your targets, and the other responsibility is to train and coach your team to achieve their targets. So you are in between. You are interacting with the higher management and you are interacting with your sales reps, that how you can improve their performance to achieve the performance goals expected. And the best thing is that you lead by example. आप जो values, जो abilities, जो अच्छी बातें आप अपनी टीम में देखना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल, आप ये चाहते हैं कि उनका नॉलेज बहुत अच्छा हो, तो अगर आपके पास खुद ही प्रोडक्ट नॉलेज नहीं होगा तो उनका नॉलेज कैसे बेहतर हो सकता है. आप ये चाहते हैं कि उनका स्किल सेट बहुत बेहतर हो, तो जब तक आपका अपना स्किल सेट बेहतर नहीं होगा, चाहे वो सेलिंग स्किल है, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल है, चाहे वो रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल है, चाहे वो मार्केट फीडबैक है या मार्केट प्रेजेंस है, तो तब तक टीम का फीडबैक अच्छा नहीं हो सकता. एक छोटी सी आपको मैं मिसाल दूंगा कि पहले भी शायद मैंने किसी लेक्चर में ये बात की है. IBM once had a sales problem. They hired a consultant and the consultant came and they worked for a month or 2 months और उन्होंने कहा जी बताएं आपका क्या डायग्नोसिस है.
The consultant said that your problem is the sales. मैंने कहा जी वो कैसे? उन्होंने कहा जी इसलिए कि आपके लोग जो हैं वो काम पे नहीं जाते, जब वो काम पे जाएंगे और अपना जो पर्सनल इंटरेक्शन है वन टू वन इन द चैम्बर ऑफ द कस्टमर बढ़ाएंगे तो आपकी सेल बढ़ जाएगी। तो उन्होंने एक सेल्स मैनेजर हायर किया। तो व्हेन ही वेंट वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग इन द ऑफिस, ने कहा जी कल 8 बजे मीटिंग होगी। तो मीटिंग ये है, तो कोई लोग देर से आ रहे हैं, तो 9 बजे तक मीटिंग जो है वो शुरू हुई। तो उन्होंने कहा जी आपके आज के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप मुझे बताएं, आज का वर्क प्लान क्या है। तो एक दूसरे की शक्ल देखने लगे क्योंकि उनको इसकी आदत ही नहीं थी। तो देन ही गेव देम अ वर्क प्लान एंड सेड कि जनाब आप जाएं और बस मीटिंग खत्म होगी 10 मिनट में, और कल हमारी मीटिंग जो है वो 8 बजे शुरू होगी और 8:10 पे ख़त्म होगी। जब अगले दिन वो लोग आए तो ऑफिस में कोई फर्नीचर और कोई चेयर्स नहीं पड़ी जिस पे आके बैठे, क्योंकि हमारी सिर्फ स्टैंडिंग मीटिंग होगी, 10 मिनट में कल की हमें रिपोर्ट दे दें और आज का प्लान बता दें। तो वो लोग बड़े हैरान हुए कि ये तो एक बिल्कुल ही नई चीज़ हो रही। they went to their work and then what happened कि उन 16 लोगों में से 10 लोग जो हैं फर्स्ट मंथ छोड़ गए and they had a new hiring, but after 3 months 300% sales वहाँ की increase हो गई। तो one of the very important function of a sales manager is to keep your people on work every day, every time. This is the first thing। और उसमें जब आप ये वैल्यू इनकलकेट करना चाहते हैं अपनी टीम में, तो ऑब्वियसली आपको भी वही रास्ता अडॉप्ट करना पड़ेगा, लीड बाय एग्जाम्पल करना पड़ेगा। तो एक आपका बहुत बड़ा रोल जो होता है मार्केट फीडबैक भी होता है कंपनी के लिए भी और अपनी टीम के लिए भी, कि जो नए ट्रेंड्स मार्केट में चल रहे हैं, नई प्रोडक्ट्स आ रही हैं या नई चीज़ें हो रही हैं, नई एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो आप कंपनी की आंखें भी होते हैं कि आप उन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करते हैं कि इस वक्त मार्केट ट्रेंडिंग क्या चली जा रही है। तो अगर हम इसको फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी को थोड़ा हम ब्रीफ करें तो फर्स्ट योर टास्क इज द गोल सेटिंग। यू नो योर गोल, दैट गोल इज गिवन टू यू बाय द ऑर्गेनाइजेशन, एंड देन योर सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू डेवलप अ कोचिंग कल्चर। द कोचिंग कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर दैट देखिए आपका टीम की ट्रेनिंग करना, टीम की कोचिंग करना, उनके नॉलेज को बढ़ाना, उनके स्किल को बढ़ाना, उनकी कस्टमर के चैम्बर में फेस टाइम को और प्रेजेंस को बढ़ाना इज योर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड देन इफ somebody is performing well, you have to recognize them, their efforts and appreciate them and communicate his performance to the organization and your seniors। और आपके पास एक सक्सेशन प्लान भी होना चाहिए कि अगर आपने एक नेक्स्ट लेवल पर मूव करना है तो आपकी जगह पर कौन रिप्लेसमेंट करेगा, क्योंकि इफ़ यू आर नॉट हैविंग एनी सक्सेशन प्लान तो फिर आप तो सारी ज़िंदगी उसी पोजीशन पे ही रहेंगे। जब आप डेवलप करते हैं, लोगों को एम्पावर करते हैं, उनको बेहतर चांस देते हैं परफॉर्म करने का डिपेंडिंग ऑन देयर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस एंड अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। SWOT एनालिसिस ऑल्सो वन ऑफ योर मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें कि आप अपनी टीम के हर इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ को एलेबोरेट करते हैं और उसको फॉर योर एडवांटेज, फॉर हिज एडवांटेज, फॉर द एडवांटेज ऑफ द कंपनी इस्तेमाल करते हैं। उसको एक अच्छे तरीके से आप अपनी वीकनेसेस बताते हैं उसकी, और उसको बताते हैं कि ये आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अपॉर्चुनिटी टू प्रोग्रेस इन योर कैरियर, अपॉर्चुनिटीज टू प्रोग्रेस इन योर फाइनेंशियल कैरियर, और आपके पास थ्रेट्स क्या हैं कि अगर आप परफॉर्म नहीं करते हैं, the one what's gonna happen। So very famous technique which we call as a sandwich technique is the best thing कि हमेशा आपको एक कंस्ट्रक्टिव वे में ही कम्युनिकेट करना है। पहले उनकी स्ट्रेंथ्स को आपने हाईलाइट करना है, अच्छी बातों को पॉजिटिव वे में हाईलाइट करना है, एंड देन यू हैव अ पॉइंट दैट वेयर इज द कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, कि आपने जो एवेल्यूएशन की है और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो उनके इम्प्रूवमेंट के लिए बेहतर हैं, एंड देन अगेन यू क्लोज द मीटिंग एक कंस्ट्रक्टिव एप्रिसिएशन के साथ और सपोर्ट के साथ कि ये करने के लिए हमारा ये कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव है, आई एम अवेलेबल टू यू ऑन दिस फ्रंट्स। तो अभी हमने एक फर्स्ट जो एक टॉपिक है उसको हमने कवर किया है कि एज ए सेल्स मैनेजर
आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ओवरव्यू हमने देखा कि गोल सेटिंग है, रिक्रूटमेंट है, फिर उनकी ट्रेनिंग है और उनकी परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग है, एप्रिसिएशन है और वे फॉरवर्ड डिसाइड करना है कि कैसे आपने आगे बढ़ना है। द सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिस पे मैं समझता हूँ कि हमें एक्सक्लूसिवली बात करनी चाहिए और हमारे यहाँ जो मैनेजर्स का हम देखते हैं ट्रेडिशनली भी विद आवर एक्सपीरियंस एंड लुक अराउंड, दैट इज हायरिंग एंड बिल्डिंग अ विनिंग टीम। आपकी जब गलती हायरिंग पे होती है तो वो गलती फिर आपको काफ़ी देर आपको हॉन्ट करती रहती है एज ए सेल्स मैनेजर। देखिए, आपको दो चीज़ें बहुत मेनली देखनी है एक बंदे को हायर करते हुए कि वन, ही इज़ mentally tough and he is physically tough, because all of the sales process is happening in every kind of a weather, every kind of situation, and a person is not physically well, so he is not able to endure all these things and working hard day and night. And second thing is they are not like a very emotional being, they are mentally tough to handle every kind of situation that is coming. तो आप जब भी हायर करें, देखें, अगर मैं आपको एक इमेजिनरी सिचुएशन देता हूँ कि आप जिस भी एरिया में काम कर रहे हैं उस एरिया के अगर नंबर 1 रैप को आप हायर करते हैं तो आपका काम कितना आसान हो जाता है, लेकिन अगर आप वर्स्ट बंदे को हायर कर लेंगे तो आपका काम कितना मुश्किल हो जाएगा। सो व्हेनेवर यू आर हायरिंग you have to be very cautious in selecting the right person for the right job. A person who's having the relevant experience, relevant strength, and a successful career track record, your job is 10 times easier. But if you hire a wrong person, then your job is very difficult. A person who is not acquainted with the medical terminology or pharmaceutical technology, it's very hard for him. You teach him and then make him to that level of knowledge and skill that is required for the job. तो प्राइमरी जॉब आपका क्या है कि आपकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी टीम जो है वो बेस्ट टीम हो, आपकी रिक्रूटमेंट जो है वो बेस्ट रिक्रूटमेंट हो। और देखेंगे आपको टीम डेवलपमेंट के अंदर अपनी तमाम नॉलेज को, अपने तमाम एक्सपीरियंस को एम्प्लॉय करना है और तमाम रिसोर्सेज जो ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रोवाइड कर रही है, चाहे वो ऑनलाइन ट्रेनिंग है, चाहे वो वीडियोस हैं, चाहे वो आपके इन पर्सन सेशंस हैं, सो दैट द पर्सन रीचेस दैट लेवल वेयर ही कैन परफॉर्म विद द ऑप्टिमम स्ट्रेंथ। ऑप्टिमम मीन्स कि अपनी तमाम एबिलिटीज को बेस्ट लेवल पे इस्तेमाल करते हुए बेस्ट रिजल्ट लेकर आना। तो स्क्रीनिंग करनी है आपने फर्स्ट लेवल पे, उसके बाद आपने इंटरव्यू करना है, इंटरव्यू करके आपने बंदे शॉर्टलिस्ट करने और उनकी असेसमेंट करनी है कि हु इज फिट as your team sales member, because if you have a good person, then it's very easy for him to develop, and then you have to look at what are the tools available in the organization and your personal wallet to make him a better salesperson by increasing his product knowledge, by increasing his selling skills and increasing his communication skills and relationship building skills and the customer presence in the chamber skills. तो ये तमाम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए सेल्स मैनेजर आती है इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल। डेवलपिंग विनिंग टीम इज ऑन गोइंग प्रोसेस, ये एक दिन में नहीं होता। आपको कोई लोग चले जाते हैं टीम में, कोई नए आ जाते हैं, एक सिस्टम चलता रहता है, लेकिन आपका अपना विजन इंतहाई क्लियर होना चाहिए कि व्हाट काइंड ऑफ अ टीम, व्हाट काइंड ऑफ टैलेंट यू आर लुकिंग फॉर, एंड वंस यू हायर अ टैलेंट एंड हाउ यू डेवलप देम एज अ बेस्ट पर्सन ऑफ योर टीम। और कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट और एक्सीलेंस चाहिए, जिससे कि आपको अपनी टीम के साथ जेल इन होगे, उनको डेवलप करना है और आगे बढ़ना है और एक सक्सेशन प्लान भी डेवलप करना है। नाउ वी कम अप विद द सेल्स प्रोसेस, डेवलपिंग ए सेल्स प्रोसेस दैट वर्क्स। लेकिन सेल्स प्रोसेस जो है वो आपको अपनी टीम के साथ डेवलप करना होता है। फॉर एग्जांपल, यू हैव अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट और यू हैव अ प्रोडक्ट that is indicated in a different value system or different segmentation. So first of all, how to develop a sales process is that you develop a segmentation of each of your product.
एक प्रोडक्ट है, चाहे आप फार्मा में है या नॉन फार्मा में है, कि आपके प्रोडक्ट का राइट सेगमेंट क्या है। एक आई ड्रॉप को जाके आप एक गायनी में या औरतों में प्रमोट नहीं कर सकते। मे बी वहां पर कोई 1% इंडिकेशन उनके पास ये आता भी होगा, बट दैट इज नॉट द राइट सेगमेंट टू प्रमोट इट। तो सेगमेंटेशन इज योर मेन जॉब as a sales manager, and then you identify by yourself what is your unique selling proposition of that product और उसको अपनी टीम के साथ कम्युनिकेट करना। सो सेल्स प्रोसेस का मकसद क्या है? हाउ टू डेवलप अ बेटर सेल्स प्रोसेस। फर्स्ट इज द सेगमेंटेशन, सेकंड इज योर वैल्यू प्रोपोजिशन, व्हाट इज योर यूनिक सेलिंग पॉइंट, and the other thing is the developing the customer insights। customer insight जो है वो आपको उसके तमाम जो रेलेवेंट चीज़ें, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम द आउटसाइड फार्मेसी and going to his assistant or his secretary, you develop all that information and collect all that information, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो हमारे कस्टमर हैं इनका इंसाइट क्या है, इनका प्रिस्क्राइबिंग या बाइंग पैटर्न क्या है। So this is your responsibility to develop this as a part of the process, and then you have a strategic planning. The strategic planning is what is your objective and what are the strategies and tactics, like the frequency of the call, like highlighting certain feature of a product, and the frequency of the visits, and the time, and how you exploit that face time with your maximum efforts with your team is one of your main role creating a sales process. This is also a continuous and never ending task, that you keep on developing new customers and you keep on enhancing the output of the current customers. There are only two ways in the world how to improve your sales. Number one, you get more response from the current customer and you develop the new customers. There is no third way in this world available for this task. And your role should be the customer centric and a solution provider. Your role is not to highlight the problems. You should not be a problem manager. You should be a solution manager. Any person you walk on the road and you ask him, he will tell you the whole world's problem, including your company, his company, world and Pakistan problems. He will tell you in like few minutes. But your role is not a problem manager. Whenever you talk about any situation, any opportunity or anything, you have to tag with it the solution. So this is the issue we are facing, but I think this is the solution. This is the problem we are facing. This is the challenge we are facing. This is the situation we are facing. And I think this is the solution. What is your opinion? This is one of the best thing a manager can talk to his team and to his seniors both. एंड द नेक्स्ट रोल, जो मैंने पहले जो चीज़ें कही आप थोड़ा उन पर डिटेल में हम बात करें, कि कोचिंग एंड डेवलपिंग योर सेल्स टीम। कोचिंग एंड डेवलपिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट value you carry as a sales manager, because if you are not coaching your team, your new hiring or even your old reps working with you, you're not fulfilling very important task of your job. And this has to be individual based. कुछ लोगों को आप देखते हैं कि उनके अंदर नॉलेज बहुत अच्छा है और स्किल्स की कमी है, तो यू टॉक टू देम दैट हाउ टू मेक एन ओपनिंग सेंटेंस व्हेन यू एंटर अ चैम्बर ऑफ द डॉक्टर और योर कस्टमर इन अ नॉन फार्मा प्रोफेशन। तो आपको बात शुरू कैसे करना है, इस पे आप उनकी प्रैक्टिस करा सकते हैं। इफ देयर इज एन ऑब्जेक्शन, देन हाउ यू कैन हैंडल दिस ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन इज ऑलवेज अ गुड क्वेश्चन। Objection means that person is taking interest in your product. तो ये तमाम स्टेप्स जो सेल्स कॉल के हैं, चाहे वो आपका इंट्रोडक्शन है, चाहे ओपनिंग सेंटेंस है, चाहे ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं, चाहे प्रेजेंटेशन है, चाहे क्लोजिंग है, चाहे हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस हैं, all these things that you have to teach them and coach them. अच्छा, इसमें जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो है कि आपका जब आप टीम को कोच कर रहे होते हैं, your feedback, an honest feedback on his performance, that help you tailor the coaching of your team. कि इंटरपर्सन एक बंदा है कि वो परफॉर्मर बहुत अच्छा है, बट ही इज एरोगेंट विद हिज टीम मेंबर, इज एरोगेंट with certain people in the organization.
all you have to identify the areas of improvement in your team. area of improvement के अंदर क्या चीजें आ रही हैं कि एक certain domain के अंदर वो बंदा perform नहीं कर रहा. For example कि उसका coverage बेहतर नहीं है, उसकी number of calls बेहतर नहीं है, उसकी performance during the call बेहतर नहीं. So when you give them an honest feedback, and for honest feedback you need to have data, you need to have the numbers. When you have the numbers, then you can have a very constructive feedback meeting with your team on a whole team or on an individual basis. तो जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है मेरे इस टीम के अंदर या इस टीम के इस मेंबर के अंदर, तो आप अपनी कोचिंग को उसके मुताबिक टेलर कर सकते हैं. एक बंदा जो है वो कम्युनिकेशन में बेहतर नहीं है, एक बंदा है वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन में बेहतर नहीं है, एक बंदा है वो आपका जो सेल्स फोर्स या एमरैप का जो कंप्लायंस है उसमें बेहतर नहीं. तो फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई, एंड दैट आइडेंटिफिकेशन शुड बी बेस्ड ऑन वेरी ऑनेस्ट feedback कि what are the challenges he is facing and why, and then you tailor your coaching and your development and your training. तो पहले ये बात बिल्कुल क्लियरली समझ लें कि आपका रोल जो है एज ए कोच और एज ए ट्रेनर है, so that they can perform like you are performing as a representative. But if you are looking somewhere else for the training all the time, that's an additional benefit or additional support you get from the company, चाहे वो आपके इन हाउस होते हैं या आपके बाहर से कोई ट्रेनिंग के लिए लोग आते हैं. लेकिन आपका प्राइमरी रोल ये है कि आपको एज ए कोच एज ए ट्रेनर एक्ट करना है विद योर टीम. उसके लिए आपको फिर इसमें भी लीड बाय एग्जांपल है, आपकी डेडिकेशन है, पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू नो समटाइम्स ये होता है कि आप ट्रेनिंग करते हैं वैसा रिजल्ट नहीं आ रहा था तो यू गॉट फ्रस्ट्रेटेड कि इनको यार इतनी दफा एक बात बताई बट दे आर नॉट गेटिंग अंडरस्टैंड. Then patience is very important. The repetition of the same thing according to the person or the persons of the team is very important. Then the next very important task you as a sales manager has is motivating and engaging your sales team. Motivation has a different levels. Motivation, one is intrinsic motivation and other is an extrinsic motivation. You have to respect each and every member of your team. You have to deal them with a very kind words. You have to be firm. You have to be assertive sometimes. But your way of communication should be very positive. और एक इज्जत का और एक प्यार का एक कल्चर आपको डेवलप करना है, अपनी टीम के साथ जेलिन होना है. और देखें कि ये कतन ये चीज़ फराहम नहीं करती कि अगर किसी बंदे में जो है ऑनेस्टी या इंटेग्रिटी के इश्यूज हैं तो उसको हम फॉरगो करें. वो आप डिसीजन मेकिंग इज इन योर हैंड, यू आर द टीम लीडर एंड यू कैन डिसाइड अबाउट इट. But to motivate people, first of all, you see some people, they have different motives of motivation. Training is also one of the biggest motivator. Sometimes you sitting with you having a cup of tea or lunch or dinner is a motivator for some people. For some people, there are different other kind of motivations. So you need to identify what is the motivating factor of every individual of your team, and then you tailor your motivation style for your team. When you have a constructive feedback meeting and you have a sandwich approach जिसकी पहले हमने बात की है, that is also a biggest motivator for the team. And then when you give them a bigger purpose and bigger mission of the team, जब उनको एक बड़ी बात बताते हैं कि आपकी एक contribution जो है उसका ओवरऑल कंपनी की सक्सेस में ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में क्या कंट्रीब्यूशन है, उस कंट्रीब्यूशन किसी पेशेंट की वेलबींग में क्या है, उससे उसको कितनी सुकून उसको मिल सकता है. इफ somebody who's using your medicine and he got relief और वो बंदा ठीक होता है, तो ये आपकी सेल्स का आपकी कॉल्स का एक बिगर पर्पस है. You are serving the humanity, you are providing solution to the people, you are providing to the ailing patient a good products. This is your bigger mission. Another bigger mission is that if you are successful and उसके fruits जो हैं, your family will get the fruits and your family will be happy, your kids get a good education, your parents, your wife, everybody, your relationship
will say that you have earned a pride and you have earned certain recognition in the company, and obviously the money also, which leads to help to run your family effectively. तो जो आपकी टीम के मेंबर्स हैं उनको पॉलिसीज का, इनकम स्ट्रीम्स का इतना आइडिया नहीं होता, तो वेन एवर यू सिट विद देम, you tell them how they can progress in their company, as a professionally and financially. आप उनको पूरा एक बना कर दें कि if you reach there then this is your income stream, if you reach to 105 or 10%, this is your income stream. So this is also kind of motivation you can give them. The first thing is the intrinsic, like उसके अपने internal factors क्या हैं, दूसरा extrinsic, उसके external factors क्या हैं, फिर एक बिगर वैल्यू जो है उसकी कंट्रीब्यूशन की, कंपनी में क्या है, उसकी अपनी लाइफ में क्या है, उसकी फैमिली में क्या है, माशरे के लिए क्या है, डॉक्टर के लिए क्या है, एक पेशेंट के लिए क्या है, या वट एवर द इंडस्ट्री इज, और उसका एक बड़ा पर्पस क्या है. जब अपनी टीम से आप ये कम्युनिकेट करते हैं तो क्या वो नहीं ये चाहता कि वो प्रोग्रेस करे, वो आगे बढ़े और उसके बच्चे उस पर प्राइड करें, उसकी फैमिली उस पर प्राइड करे. फॉर दैट ही हैज टू be motivated and work hard to progress in his profession, to become in the top 10, top 5, top 1%. तो ये डिफरेंट तरीके हो सकते हैं जिससे कि आप अपनी टीम को जो है वो मोटिवेट कर सकते हैं और एक इंक्लूसिव कल्चर बनाएं. नो फेवरेटिज्म. सम टाइम और मेनी टाइम दिस हैपेंस, द मैनेजर्स दे हैव देयर फेवरेट्स एंड दे सपोर्ट देम मोर, लाइक सम एरिया और सम गुड कस्टमर और सम गुड सेल्स. ये जब कल्चर डेवलप होता है तो दूसरी टीम के लोग डीमोटिवेट होते हैं. जहां आपने मोटिवेशन करनी है तो वहां पे आपने डीमोटिवेशन को भी बचाना है. यू हैव टू बी फेयर, you have to be fair with dealing each and every member of your team, और जिसमें कि आपका एक इंसाफ का कल्चर हो, जिसमें किसी की फेवरेटिज्म ना हो, जिसमें किसी की एक्स्ट्रा सपोर्टिंग ना हो, किसी भी ऐसी एक्टिविटी को जिसमें कि इंटेग्रिटी या ऑनेस्टी मुतासर होती है उसको बिल्कुल आप सपोर्ट ना करें. इफ यू सपोर्ट दैट, दैट इज गोइंग टू इफेक्ट योर करियर वेरी सून. वो आप देखेंगे ऐसी चीजें बहुत ज्यादा देर छुपी नहीं रहती. और टीम की जो एंगेजमेंट है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड टीम एंगेजमेंट के अंदर सबसे मेजर चीज है आपका एक ऑनेस्ट फीडबैक, एंड योर ऑनेस्ट फीडबैक अबाउट हिज परफॉर्मेंस, अबाउट हिज नॉलेज, about his contribution, his face time, his time in the market, one-to-one with the customer, and then effectiveness of that presence. That is your honest feedback and engagement with your team. Managing performance and accountability is your another factor. You have to be very nice all the time, but you have to communicate honestly what is going right and what is not going right. जैसे आप देखें certain numbers you see you are not happy or the organizational objective के साथ in line वो numbers नहीं,